Hey champions, I hope you all are doing good. So today we are going to start statistics. So first of all, you should know from where did the word statistics arrive. So statistics is derived from Latin word status, which means a political state. Now this is the meaning of statistics. How statistics came into existence, statistics कैसे start हुई. तो सबसे पहले क्या था, statistics was collection and analysis of data relating to population. सपोज ये एक एरिया है और यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ पीपल रहते हैं, तो स्टेटिस्टिक की शुरुआत हुई सबसे पहले इन लोगों को के बारे में डेटा को कलेक्ट करना और फिर उसे एनालाइज करना, लाइक मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, एंड देन उसमें भी कैटेगरीज वाइज लाइक एज wise we can divide them. So this was the starting of statistics. After this, the data relating to material wealth and then army requirements necessities collection of information. Statistics की starting हुई population की data collect करने से. Afterwards हम बाकी डेटा भी कलेक्ट करने लग गए, लाइक मटेरियल वेल्थ, हमारी सोसाइटी में वेल्थ कितनी है, कितनी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑल दीज थिंग्स वर कमिंग अंडर स्टैटिस्टिक्स. आई होप आपको क्लियर है कि स्टैटिस्टिक्स की स्टार्टिंग कैसे हुई. सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स टर्म्स किसने यूज किया इस डेटा की कलेक्शन और एनालिसिस के लिए, तो हिज नेम वाज गॉटफ्राइड एक्नेविल. ही इज नोन एज द फादर ऑफ स्टेटिस्टिक्स. इन्होंने सबसे पहले स्टेटिस्टिक्स वर्ड यूज किया था गॉटफ्राइड एक्नेविल ने, एंड ही इज अ जर्मन ऑथर. और इन्होंने कौन से ईयर में ये वर्ड यूज किया था, 1749 में. सो ही इज नोन एज फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स. सो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन आए हु इज नोन एज फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, योर आंसर विल बी गॉटफ्राइड एक्नेविल. आई होप दिस इज क्लियर. अब हम कॉमन लैंग्वेज में स्टैटिस्टिक्स को क्या कहते हैं. इन कॉमन लैंग्वेज जो स्टैटिस्टिक्स है वो न्यूमेरिकल डाटा है, नंबर्स में ही हम कलेक्शन करते हैं. इतने लोग हैं, दीज आर नंबर ऑफ वेल्थी पीपल, दीज आर द नंबर ऑफ पीपल हु आर लिव पॉवर्टी लाइन. आपने देखा होगा जनगणना होती है, पॉपुलेशन काउंटिंग, आपके घर में लोग आते हैं, दे आस्क कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, कितने मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, उनकी एज, चिल्ड्रंस, they ask everything. So that is the part of statistics, that is collection of data. Then second step में हमारी गवर्नमेंट ने persons recruit किए होते हैं, they analyze it, analysis करते हैं the number of males, females, old age group people, children. Then after that they interpret the data and give the final conclusion, like you know the population of India is this, population of China is this, population of particular state is this. So this all we get through statistics. I hope now you got to know what is statistics and from where we got the term statistics, who is known as father of statistics. So these all should be clear to you after watching this वीडियो. और आज के टाइम पे हम स्टेटिस्टिक्स को दो सेंसेस में पढ़ते हैं. पहला है न्यूमेरिकल डाटा and second one is statistical methods. So if you found my video helpful, please like, share and subscribe. अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टैटिस्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे.